Hello guys, so today we are going to discuss about the two gates which are really very important. First one is known as XOR gate, which is called exclusive OR gate, and second one is called XNOR gate. So we have in the last lecture missed these two gates, so today we are going to discuss about them. So starting with the first one, XOR gate, that is called exclusive OR gate. So I have written a special definition of it which says that this gate will give you the output 1 only when, if and only if only one of the inputs is high. I'm going to use two types of words in this video. तो जब भी मैं बोल रहा हूँ the term high, whenever I'm using the term high really means your input is 1, and whenever I'm using the term low really means your input is 0. So these are the two terms. It must be clear to you. High means input is 1, low means input is 0. So जब भी हम exclusive OR gate को study करते हैं, three things are really very important. First thing, what is the symbol of the gate? Second thing, what is the Boolean expression of it? And the third thing is, what is the truth table? So starting with the first one, that is what is the symbol of exclusive OR gate? We are going to have two inputs in here. Clear? First one is called input A, and second one is called input B. So we have to draw the exclusive OR gate. So this is how our exclusive OR gate basically looks like, and that is the output diff which is called Y. Okay, so this is the symbol. So whenever I say what is the symbol of exclusive OR gate, this is my symbol, and this is my Boolean expression, that how I can represent it. Y will be equal to what? It will be A exclusive, this is a symbol of exclusive, B. So wherever I'm using this symbol, it means it is representing an exclusive gate, exclusive OR gate. So this is my expression, or I can say this is my Boolean expression to represent what? To represent the exclusive OR gate. In a more simplified way, if I have to represent it, Y is equal to basically what? It is A B bar plus A bar B. In simple words, उसको हम ऐसे भी बोलते हैं A dot B complement plus A complement dot B. This is another way of representing the Boolean expression of the exclusive OR gate. So what is the meaning of this complement? Let us suppose if I say A is 0, A as input is 0, so what will be the complement of A as 0? It will be 1. Now if I say A is 1, its complement basically means reverse of it. It is going to be 0. Similarly for the B also, if B is 1, obviously the B complement will be 0. If it is 0, the complement will be 1. If B is 0, B complement will be 1. This must be clear to you that what is the meaning of complement actually. It is the basically inverting the output of it. If input is 1, output will be 0. If input is 0, output will be 1. So now we are going to focus on the next thing, that is the truth table of it. As you guys can see, हमारे पास यहाँ पे inputs कितनी है? 2 inputs हैं, A and B. तो इसके लिए जो possible combinations है वो कितने आएंगे? The formula is 2 raised to power n. So it is basically 2 raised to power 2, so 4. So it means यहाँ पे 4 combination जो है वो possible है input के. We have two inputs. First one is called A, second one is called B, and output is basically A exclusive B. If you look at it, what is the first input? Both are 0, or A is 1, B 0, or A 0, B 1, or both are 1. और हम क्या बोल रहे हैं, आपको आउटपुट कब मिलेगी? इफ ओनली वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई. इट मीन जहां भी आपके पास एक इनपुट हाई है, दूसरी लो है, आपको आउटपुट मिलेगी 1, अदरवाइज वो क्या होगी? 0 होगी. सो स्टार्ट विद फर्स्ट केस. बोथ द इनपुट्स आर 0, बोथ आर लो. इफ बोथ आर लो, आउटपुट विल बी 0. Secondly, one of the inputs is high, other is low. A is high, B is low. It means we are going to get output as 1. Secondly, अगर हम देखें A 0 है, B 1 है. Clear?
तो अगेन वन ऑफ द इनपुट इज लो, अदर इज हाई, सो वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट एज 1. And in the last case, both of them are 1, so both of them are high. But condition is that only one of the inputs is high, so it means again we are going to get 0. Okay, so this is the truth table. It means हमको इनपुट कब मिलेगी, जब ओनली आपकी कोई एक इनपुट हाई है, दूसरी क्या है, लो है. अगर दोनों ही हाई हैं, 1 1 है, या फिर दोनों ही लो हैं, 0 0 है, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 ही आएगी. So this is called our exclusive OR gate. We can apply this formula also. अगर आप ये फार्मूला अप्लाई पुट करके भी निकालते हो आंसर, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा. I will not cover all of them, but I will take first case of it. For example, अगर आप A और B को देखते हो, तो यहाँ पे A क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. B क्या यहाँ पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट उसका कुछ भी आए, चाहे 1 आए, तो 0 × 0 0, 0 × 0 0, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 ही आएगी. तो अगर ये फार्मूला अप्लाई करते हो यहाँ पे डिटेल में ट्रुथ टेबल के लिए, तब भी आपकी आउटपुट्स यही आने वाली हैं. ओके, नाउ सेकंड इज बेसिकली एक्सक्लूसिव नॉर गेट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड, दैट इज टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ द exclusive NOR gate. So again we have two inputs. First one is A, second one is called B. Okay, so this is how it basically looks like. It is just a exclusive gate. The symbol is similar to exclusive gate, but an addition of NOT gate into it at the end of it. So if I have to write the output of it, what exactly it is, initially it is A exclusive B. जो आपने यहाँ पे लिखा है ऊपर, सेम यहाँ पे भी है, बट चेंज क्या है यहाँ पे. नाउ सिंस वी आर हैविंग एंड नॉट गेट एट द एंड ऑफ इट, सो इट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंटायर आउटपुट. एंड इफ यू फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ एक्स नॉर गेट, इट सेज दैट वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर व्हाट, दे आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स या दोनों क्या हो, 0 हो, सेम हो, या दोनों क्या हो, 1 हो. सो this is the expression of the XNOR gate. In simple way I can say it is basically y a b complement plus a complement b complement of the entire thing at the end of it. So if now focus on the Boolean expression of it, this is what, a as input, b as input, output is A exclusive B complement of the entire thing. So this is my symbol. Okay, this is my symbol of what? This is my symbol of exclusive NOR gate. This is my expression. This is called Boolean expression. Okay, this is my expression for the XNOR gate. And now I will focus on the truth table of it. So again, for combinations, it can be 0 0 or 1 0, or it can be 0 1 and last one is 1 1, similar case. So now again, since we are saying it is a exclusive OR gate only, but with the addition of NOT gate at the end of it, so जो भी इसकी आउटपुट्स आपको मिलेगी वो इसकी क्या आएगी, XOR गेट से आपको ऑपोजिट मिलेंगी. तो जहाँ कहीं भी 1 है वहाँ 0 है, वहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा. और जहाँ कहीं भी 0 1 है वहाँ पे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा. ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा. लास्ट में यहाँ पे 1 है, 0 है, 1 1 0, तो इसके लिए क्या जाएगा, वो 1 आ जाएगा. क्लियर. और हम बोल भी क्या रहे हैं कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ए एक्सक्लूसिव बी का कॉम्प्लीमेंट. तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा. तो फर्स्ट केस में दोनों इनपुट्स क्या हैं, 0 हैं, आइडेंटिकल है, सेम है. इफ बोथ द इनपुट्स आर 0 0, इट मीन्स वो क्या है, आइडेंटिकल है, जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट है कि अगर दोनों 0 हो तो हमको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. या फिर दोनों क्या हो, 1 1 हो, ये भी आइडेंटिकल है. तो यहाँ पे 0 0 है तो आपको आउटपुट मिल रही है 1. यहाँ पे 1 1 है, आइडेंटिकल है, तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, 1. यहाँ पे नहीं आइडेंटिकल तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, 0 एंड 0. इन सिंपल वर्ड्स, XNOR gate is basically complement of XOR gate, as simple as that. उसकी आउटपुट जो आ रही है वो XOR से क्या आएगी, रिवर्स आएंगी, ऑपोजिट आएंगी. जहाँ 1 आ रही है इसके लिए क्या आएगी, 0 आएगी. So that is all about the XOR gate and XNOR gate for today. Please subscribe our channel. Thank you very much.